जब हम 85 में महाराज अजैब सिंह महाराज जी के प्रोग्राम में कच्ची लोहारवाड़ी बॉम्बे में गए और सब लोग लाइन से दर्शन में खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे हमारे साथ आंध्रा की और 10 संगत आई थी, वो भी हमारे पीछे खड़ी थी। लेकिन जब मैं अंदर गया तो बाबा जी ने कहा दरवाजा बंद करो, तो दामू जी ने दरवाजा बंद कर दिया, बाकी संगत सब बाहर रह गए। In 1985, when I went to attend the program of Sant Ajaib Singh Ji in Bombay, it was in Kachi Luharwadi, and there was a queue for the darshan, and I had another 10 satsangis from Andhra, and we had all gone together. So when we went in, Sanji closed the door behind me, and he told the others to wait. So then he asked me to sit down. तो मैं बैठ गया और महाराज जी, क्योंकि मैं आंध्रा कर्नाटका में 14 साल हो गए थे आश्रम में रह के, और मैं ऊब गया था। मैं अपने गांव बनारस जाना चाहता था, क्योंकि हमारे संत मत में किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना, मेहनत करके कमा के खाना और सत्संग चलाना है। So when I went there, it had been almost 14 years. 14 years had passed, and I had been staying in Karnataka and Andhra, and I was quite dejected staying there. So I wanted to go back and stay in Varanasi. I wanted to go back. In Santmat, it is important that we have our own earning and our own livelihood, and we don't remain dependent on anyone. So I wanted to go back and have do some livelihood there and do some earning of my own. तो अपनी जमीन में काम करके वहीं पे ध्यान भजन करेंगे बोल के सोच के बनारस जाने का पूरा तैयारी किया था, और माँ बाप को लेटर भी लिख दिया था। तो माँ बाप सोचे 14 साल के बाद आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, खेती संभालेगा। So we had farms. We have farms there in Varanasi. So I felt I will do farming there, and I will do my bhajan simran when I go back. And I had accordingly also written a letter to my parents, and they were also very happy that I was returning after 14 years, and they felt that I can help them in the farms, and they were quite pleased that I'm coming back. तो महाराज कहते नहीं बेटा, तुमको बनारस नहीं जाना है, तुमको आंध्रा में रहना है और वहाँ सत्संग करना है। But Sanji told me that I should not return to Varanasi, and I should instead go back to Andhra. And when I go back, I should do satsangs in Andhra Pradesh. बाबा सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना है, वो तेरी ड्यूटी है। उन्होंने अब मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, मुझे जवाबदारी दिया है, और मैं उनके हुक्म से ये बात कह रहा हूँ। So he told me that the saplings that Somnath Babaji has planted, you should go back and you should water those saplings and help all of those sangat who have been initiated by Somnath Babaji. And uh, he said that I'm telling you this with the authority of Somnath Babaji, because I'm currently doing the same for Somnath Babaji, and it is with his instructions that I'm telling you that you should do this. तो बाबा जी बताते रहे, मेरा कोई ख्याल नहीं था, मैं ऊब गया था। इतना बरस पहाड़ों में, गुफाओं में, जगह जगह टाइम निकाल के भजन करके थक गया था, और मैं अपने देश जाना चाहता था। तो बाद में बाबा जी कहते नहीं बेटा, तो मैं रोना आ गया। मैं रोते रहा, बाबा जी बोलते गए, मैं रोते रहा, बाबा जी बोलते गए। बेटा सब गुरु करता है। So I was actually quite tired of
being in Andhra and Karnataka, and I was staying in several caves there and doing my meditations, and I was really, I had made up my mind to go back. So when Sanji told me that no, I should not go to Varanasi and instead go back to Andhra, I was quite disappointed. But then he kept telling me, and tears kept flowing down my eyes. And for nearly 45 minutes, he was explaining to me, and I was crying, and he was explaining to me. उसी में महाराज जी ने अपना सारा जीवन चरित्र बताया कि किस तरह से मैंने कृपाल सिंह महाराज जी का बात माना और उनकी दया मिली, तो तू चिंता मत कर, सब गुरु करेगा, तू जा। And in that 45 minutes, he told me about his life history and how he had followed the instructions of Kirpal Singh Ji Maharaj. He said that I should also do the same. I should listen to the Sadguru. And it is the Sadguru who does everything. So you should listen to what he says and do accordingly. और बहुत कुछ बताए। मैं बाद में डर गया कि नामालूम किस रूप में संत क्या हुक्म करते हैं, अगर मैंने हुक्म अदुलिल किया तो मुझे जिंदगी भर सुख नहीं मिलेगा। And then I also got scared that if I disobey the master, and one doesn't know in what way the master has decided and made given that instruction. So if I disobey, then maybe I will never get happiness in my life, and I will always be disappointed. तो बाद में मैंने उनका लास्ट में मन को समझाया, हुक्म माना, कहा महाराज ठीक है, मैं आपके कहने के अनुसार मैं माने आश्रम माने आंध्रा में जाता हूँ। Then finally, I made up my mind, and as he had instructed, I told him that okay, I will follow whatever you say, and I will go back to Andhra. तो इस तरह से उनके जो है कि बात को सिरोधार करके मैं आंध्रा में आके जंगली और पहाड़ी इलाकों में बैठा। तो इन दो महापुरुषों ने बहुत कुछ किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। So, following his instructions, I came back to Andhra, and in the hilly and the jungle areas of Andhra, I sat and I did my devotion there. Both the great masters, Somnath Babaji and Ajaib Singh Ji, they extended all kinds of grace upon me. हर तरह से उन्होंने रूहानियत से, धन से और बाहरी हर तरह से उन्होंने हमारी मदद किया। अजैब सिंह महाराज यहाँ तक कि 3 बॉम्बे प्रोग्राम में 3 बार उन्होंने सेवा भी हमें बख्शी थी। जो संगत बाल्टी में डालती थी तो लास्ट टाइम में वो ऊपर बुलाते थे अपने रूम में। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता, आधी संगत चली जाती थी, तब ऊपर बुलाते थे और बुला के उनका कमरा था ना रेस्ट के लिए, वो कमरे में बुला के कहते अच्छा घड़ी लगा दे, और वो बाल्टी 3 पड़ा रहता था कोने में, वो लेके आ, तो लेके आता, कहते डाल, सामने उड़ेर दे, सामने डाल देता, कहते बैठ तब भी लगा। तो महाराज जी 100, 500 का और 1000 का, मैं 10, 20, 50 का थप्पी लगाते, तो काफी लंबा समय लगता, 3 बाल्टी पैसा। तो हमको डर लगता था कि महाराज सामने कितना टाइम बैठना पड़ेगा। तो सब लगा के फिर काला कवर में डाल के, रबर लगा के काला कवर में डाल के कहते थे ले जा, पप्पू को नहीं बताना, ले जा, संगत की सेवा में खर्चा कर देना। So both these great saints helped me in all possible respects. They showered grace upon me in terms of spirituality, in terms of material uh, help, and all kinds of help. It is with their help only that all this is possible. And so much so that in 3 programs in Mumbai, when of Sanji, when I attended, after the program got over and half the Sangat left, people would take darshan, and as you know, people, whatever little seva they give, that is kept in the bucket.
and Sanji would call me at the end of the program. He had a resting room upstairs, and he would call me there. All the three programs he did this, and he called me, and then he locked the door behind me, and then he would ask me to get those buckets of seva and empty the contents of the buckets. Then he said, okay, now you pack these up, and we would then count and make bundles of different notes. So he would count 100 rupee notes and 500 rupee notes, 1000 rupee notes, and I would make bundles of 50 rupee notes and 10 rupee notes. Like that, we would make the bundles. And I used to always be very scared of sitting in front of Sanji. And I used to always wonder how long this is going to take and how much time I have to sit in front of him. So we would count, and then finally he would wrap everything in a black plastic and put a rubber band, and then give me that all that seva. And then he would tell me that, okay, now you go and take care of your ashram and spend it on the sangat. You take it with you, and don't tell Papuji about it. तो इस तरह से उनके आर्थिक सहायता से ही आज जहाँ हम सब ये सब देख रहे हैं, ये उन महापुरुषों की कृपा है, नहीं तो हम उसके लायक नहीं थे. So whatever you are seeing, all in this ashram or in Gudela, everything, all that is with the grace of the great masters. Otherwise, without their grace, I was nothing. हमारे अंदर सत्संग करने की भी ताकत नहीं थी. ये तो उन महान हस्तियों की ही दया है जो अंदर बैठ के बोलती हैं, और जो वो हुक्म करती हैं हम वही बोलते हैं. So I didn't even have the capability of giving satsangs or speaking in the satsangs. It is only these great saints who speak, and I just simply carry out their orders, and they tell me whatever I have to do, and I do that. नामदान देने का 97 में बाबा जी ने शरीर छोड़ा ना. हाँ, 97 में जून में, जुलाई. July. हाँ, तो उसी प्रोग्राम में एक अनंतपुर से लेडीज आ गई थी अकस्मात, आंध्रा वाली. तो हम उसको दर्शन को लेके गए. तो बाबा जी कहते हैं कि हम बोला, महाराज अनंतपुर से ये तेलुगु भाषा वाली है, और पता नहीं कैसे आपके ऊपर इसको प्रेम आया, वो इतना दूर एक आदमी को लेके आई आपसे नामदान लेने को. So in that last program, when Sanji left his दिल्ली in Delhi, प्रोग्राम, in the Delhi program in 1997, I was attending that, and there was a lady who had come from Anandpur. She got someone with her, and at the time of initiation, I went to meet Sanji, and I told him that this lady, she only speaks Telugu. She doesn't understand your language, but I don't know how she has got so much faith, and she has developed that faith in you, and she has taken some help to come here and seek you and initiation. जो कि हमने कभी उसको अपने सत्संग में नहीं देखा था. वो उसका पति टीचर है, अनंतपुर में रहती थी, खाली घर का काम करती थी, लेकिन कैसे आ गई उसको देख के हमको भी आश्चर्य हो गया. वही लास्ट थी नाम लेने वाली. So she, I had never seen her in any of our programs here, and her husband was a teacher in Anandpur, and she used to do some household work. So I was very surprised myself to see how she had managed to come all the way to Delhi on her own, and she was the last initiate. तो मैं महाराज जी के पास पप्पू के घर में ऊपर महाराज जी के पास दर्शन के लिए लेके गया. तो मैंने कहा, महाराज ये आपके नाम लेने के लिए उतना दूर से आ गई है. तो महाराज कहते हैं, अच्छा इसको कल नीचे बिठा के, नीचे हाल है उधर बिठा के नामदान दे दे. तो बोला, महाराज ये काम वो आपसे नाम लेने को आई है.
और हम नाम देंगे तो उसको तसल्ली नहीं, सारी जिंदगी पछताएगी। हाँ, आपसे नाम लेने के लिए आई है, आप ही नाम दो, ये हमारा काम नहीं है। So I took her to Papaji's house, and Sanjeev was staying on the top floor. And I went there, and then I told him and requested him that she wanted to take initiation. So Sanjeev told me that okay, you call her tomorrow, and in the basement, in the ground floor, you give her initiation. So with folded hands, I told Sanji that this is not my work. I cannot give initiation, and this lady has come to get initiated from you or by you. And if I initiate, then she will have that kind of some repentance that someone else has initiated her, and whole life she will keep feeling like that. So please don't do that. You only initiate her. तो बाबा जी कहने, मैं बोल रहा हूँ ना, लेके जा। मैं बोला नहीं महाराज, आप रहते हुए ये काम मैं नहीं कर सकता। So he told me that never mind, I am telling you to do it, so you do it. But then again, with folded hands, I told him that no, if you are here and I cannot do that. तो बाद में आप नाम देने के बाद मैं समझा दूंगा तेलुगु में, लेकिन ये काम मेरे से होने वाला नहीं। तो बाबा जी बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उसको नाम, वही लास्ट औरत थी जो बाबा जी के लास्ट टाइम में नामदान मिला था। So then I told Sanji that you please give her the initiation, and then I can explain everything. I can explain the theory to her in Telugu. So finally, Sanji agreed, and he gave her the initiation, and I explained everything to her. She was the last initiate of Sanji. हाँ, तो कहते इस तरह से संतों का आपस में कनेक्शन होता है। तो सब संत एक ही परमात्मा के अंदर से आए हुए समुद्र की बूंदें होती हैं, और फिर उसी समुद्र में जाके समाती हैं। सब उसी परमात्मा के देश में जाते हैं। All the saints are connected. All of them are drops from the ocean of God Almighty, and all of them come into this world. And when they go back, they again merge back into the ocean of God Almighty. उनका आपसी प्रेम प्यार होता है, वो आपस में मिले होते हैं, और ब्रह्म में उन सब की मीटिंग भी होती है। लेकिन जो कुछ दोष है संगत के अंदर होता है। So they are all very much connected to each other, and they also have meetings in the Brahm. They sit together in the Brahm, and they have a very good and loving relation between each other. It is only the Sangat which creates these differences. हाँ, तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन से जुड़े। The time is good and the atmosphere is quiet, so let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.